I go out. मैं अजान हो रही है उसके बाद स्टार्ट करें. या कोई बात नहीं कीजिए. Start now. Bismillahirrahmanirrahim. Accordingly, at Zenda, I got out, and as the train passed, when I stood on the platform, I saw my friend Madame de Maubin in her place. Clearly, she was going through at Strelso, having with more providence than I could boast, secured apartments there. I smiled to think how surprised George Featherly would have been to know that she and I had been fellow travelers for so long. I was very kindly received at the hotel. It was really no more than an inn kept by a fat old lady and her two daughters. They were good, quiet people and seemed very little interested in the great doings Israel 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 मैम क्या वर्ड है Strelso. The old lady's hero was the Duke, for he was now, under the late King's will, master of the Zenda estates and of the castle, which rose grandly on its steep hill at the end of the valley, a mile or so from the inn. The old lady, indeed, did not hesitate to express regret that the Duke was not on the throne instead of his brother. We know Duke Michael We know Duke Michael, said she. He has always lived among us very Eurytanian nonce Duke Michael. But the king is almost a stranger. He has been so much abroad. Not one in 10 knows him even by sight. And now, trimmed in one of the young women, they say he has shaved off his beard, so that no one at all knows him. Shaved his beard? Exclaimed her mother. Who says so? Johann, the Duke's keeper, he has seen this king. Ah, yes, the king, sir. The king, sir, is now at the Duke's shooting lodge in the forest here. From from here he goes to Strelso to be crowned on Wednesday morning. I was interested to hear this, and made up my mind to walk next day in the direction of the lodge on the chance of coming across the king. The old lady ran on garrulously. Ah, and I wish he would stay at his hunting, that and mine, and one thing more, are all he loves, they say, and suffer our Duke to be crowned on Wednesday. That I wish, and I don't care who knows it. Hush, mother, urged the daughters. There's many of to think as I do, cried the old woman stubbornly. ओके सो यहाँ हमने देखा कि आई विल गिव यू अ लिटिल बैक स्टोरी. हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रेजेंडाइल जो होता है, रुडोल्फ रेजेंडाइल, वो जो है अपने घर से झूठ बोलकर आता है कि मैं जो हूँ एक बुक लिखने जा रहा हूँ,
एंड देन जब वो आ जाता है अपने दोस्तों से मिलता है, वो उसके दो दोस्त होते हैं, उन दोस्तों से मिलता है, उनमें से एक जो दोस्त होता है वो एक लड़की को पसंद करता है जो कि उस वक्त उन्हीं के साथ एक होटल में होती है। अब उनको बाद में पता चलता है कि वो लड़की है मैडम डी मोबान। अब जब ये लोग जाने लगते हैं, जब रुडोल्फ को वो सी ऑफ करने के लिए ट्रेन में जा रहे होते हैं, तो वहां पे पता चलता है कि मैडम डी मोबान भी उसी ट्रेन में जा रहे हैं जिसमें रुडोल्फ जा रहा है, कहाँ, रूरितानिया। अब जो है उसका जो दोस्त होता है वो जरा सा लाइक मजाक उड़ाता है कि क्या पता कि तुम दूसरे वाले जो पसंद करते हैं उसका दोस्त, वो कहता है क्या पता तुम इसके साथ कुछ स्कोर कर लो, क्या पता ये तुम्हारे प्यार में पागल हो जाए, मतलब वो मजाक कर रहे होते हैं। खैर उसके बाद जो है वो रुडोल्फ कोशिश करता है कि वो मैडम को इतना तंग ना करे, लाइक उनके सामने ना जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो अनकंफर्टेबल हो जाए। लेकिन जब वो अपने स्टॉप पे स्ट्रेल स्टॉप पे उतरता है तो वो देखता है कि मैडम भी मुबानी भी उसी के साथ उतरती है। तो वो दिल में सोचता है, कहता है कि मेरा दोस्त ना होता तो मैं उसे कितना खुश होता ना, और मैं उसे बताता कि इसकी जो पसंद करने वाली लड़की है, जिसको वो पसंद करता है, वो और मैं दोनों एक ही साथ पूरा सफर तय करते हुए आए हैं, हमने कहीं ऐसा स्टॉप नहीं था जहाँ हम साथ नहीं थे। खैर वो उतरते हैं स्ट्रेलसाउ पे। स्ट्रेलसाउ पे एक छोटा सा इन होता है जहाँ पे वो स्टे करता है, और अगले दिन जो होती है वो किंग की कोरोनेशन होती है, मतलब किंग वॉज टू बी क्राउन। अब जो है वहाँ एक ओल्ड लेडी होती है, उसकी दो बेटियां होती हैं। अब वो सब जो है वो ड्यूक माइकल जो होता है उसकी जो है ज्यादा क्या तरफदारी करने वाले होते हैं, लाइक वो उसके सपोर्टर्स होते हैं। और वो ये कह रहे होते हैं कि किंग जो है उसको किंग नहीं बनना चाहिए, जो अभी हमारा जो न्यू किंग बनने वाला है उसको किंग नहीं बनना चाहिए, बल्कि ड्यूक माइकल को किंग बनना चाहिए, क्योंकि उसको हमने हमेशा से अपने साथ देखा है, उसने उसी ने हमारे सारे मसले सुलझाए हैं। जबकि जो आदमी अभी किंग बनने वाले हैं, हम तो उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं है। बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने कभी देखा तक नहीं है। ठीक है। तो वो फिर उसकी बेटी कहती है नहीं, जो ड्यूक माइकल का सर्वेंट है जिसका साथी है जोहान, उसने उसे देखा है, उसने कहा था कि अब तो किंग ने जो है दाढ़ी शेव कर ली, अब तो किसके पहचान में और भी नहीं आता। तो ये उनकी नॉर्मल बात हो रही थी, तो इस पे जो है वो ओल्ड लेडी कहती है कि नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि कल जो है ड्यूक माइकल किंग बन जाए, ऐसा हो कुछ कि ये जो आदमी किंग बनना जा रहा है ये किंग ना बने, इसकी जगह ड्यूक माइकल किंग बन जाए। तो उसकी जो बेटी होती है वो उसे चुप कराती है कि नहीं मदर, ऐसे नहीं बोलेंगे आप, वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि बराबर में जो है किंग के सपोर्टर्स हो, ड्यूक माइकल के नाम हो बल्कि किंग के सपोर्टर्स जो बनने वाले हैं। तो वो उसे चुप कराती है। तो वो कहती है, उसकी माँ से कहती है कि देर इज मेनी टू थिंक एज आई डू, मतलब वो कहती है बहुत सारे तरीके हैं कि जिससे वो किंग नहीं बन सकता। ठीक है। स्टार्ट। Yes, ma'am. Concerning the color of men's hair, I threw myself back in my deep armchair and laughed at her zeal. For my part, said the younger and prettier of the two daughters of fair books on a smiling bench, I had Blick Michael, a real, a real Elfberg. Albert for me, Alfberg for me, the king, for me, mother. The king, they say, is as red as a fox or as. And she laughed mischievously as she cast a glance at me and tossed her head at her sister's reproving face. Many a man has cursed this red here before now. Muttered. Muttered, muttered the old lady, and I remembered James, fifth Earl of Burleson. Burleston. But never a woman, cried the girl. Eh, and woman, when it was too late, was the stern answer, reducing the girl to silence and blushes. How comes the king here? I asked, shivering in embarrassed silence. It is the duke's land here, you say. The duke invited him, sir, to here till Wednesday. The duke is at Strelso preparing the king's reception. Then they refused. मैम आगे पढ़. Yes, continue.
Then they refrains. None better, said the old lady. But my rosy damsel tossed her head again. She was not to be repressed for long, and she broke out again. They love one another as men do who want the same place and the same wife. The old woman glowered. I'm sorry, ma'am, connection problem हो गया था. कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करो। The Okay, what the same wife to how the young lady, all they would knows the Black Michael well than mother. The Duke would give his soul to marry his cousin, the Princess Flavia, and that she is to be the queen. Upon my word, said I, begin to be sorry for your Duke. But if a man will be a younger son, why he must take older what the older leave, as thankful to God as he can. And thinking of myself, I shrugged my shoulders and laughed. And then I thought also of Antoinette de Mauban and her journey to Strelso. It's little dealing Black Michael has with, began the girl, braving her mother's anger, but as she spoke a heavy step sounded on the floor and a gruff voice asked a threatening tone. ओके, तो यहाँ पे देखा कि वो लोग जो हिंदी उपन्यासों के बारे में बात कर रहे होते हैं, ये रुडॉल्फ होता है वहीं पे बैठा हुआ सारी बातें सुन रहा होता है। थोड़ी देर बाद एक लड़की बोलती है, जो दो बहनें थी उनमें से जो क्या कहना चाहिए, दूसरी वाली जो छोटी बहन होती है वो कहती है कि मुझे तो ब्लैक मार्कल बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब वो उसका वजह बताना स्टार्ट होती है कि मुझे तो मेरे लिए तो एक प्योर एल्सबर्ट होना चाहिए मदर। वो अपनी माँ को अपनी चॉइस बता रही होती है। एल्सबर्ट कौन, जो कि अभी किंग बनने वाला है, तो उन्हीं की फैमिली में से होता है। ब्लैक माइकल को वो लोग इसलिए ब्लैक माइकल बोलते हैं क्योंकि ब्लैक माइकल के बाल बेसिकली ब्लैक होते हैं, और जो एल्सबर्ट फैमिली के लोग होते हैं उनके बाल जो होते हैं रेड होते हैं। और जो हमारा रुडॉल्फ है इसके भी बाल रेड है, और ये काफी ज्यादा ना एल्सबर्ट फैमिली से रिजेंबल करता है। तो जब वो ये बता रही होती है कि प्योर एज पर फॉर मी, उसके बाल जो है वो एक लोमड़ी की तरह बिल्कुल रेड है। तो जैसे ये बात बोलती है ना, तो वो एल्सबर्ट की तरफ देखती है, रुडोल्फ की तरफ सॉरी देखती है, और मतलब एक अजीब सी स्माइल देती है। तो वो थोड़ा परेशान होता है कि भाई ये मुझे क्यों देख रही है, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा होता। फिर उसको पता चलता है कि अच्छा ये एल्सबर्ट के बारे में बात करके मेरी तरफ देखती है। फिर वो दोबारा से जो है वो ड्यूक माइकल के बारे में बात करना स्टार्ट होते हैं। फिर वो एक लड़की का जिक्र करते हैं, प्रिंसेस फ्लेविया। अब प्रिंसेस फ्लेविया जो है, ड्यूक माइकल जो है वो उसको पसंद करता है, मगर जो है प्रिंसेस फ्लेविया शादी किससे करेंगी, वो करेंगी एस्पर्ट से, जो किंग बनेगा, क्योंकि शी इज द प्रिंसेस और वो किंग से शादी करके क्वीन अपॉइंट होगी। अब लेकिन ड्यूक माइकल जो है वो प्रिंसेस फ्लेविया को पसंद करता है, तो उस पर उसकी माँ कहती है कि अगर किंग ने उसे इनकार कर दिया तो ही हो सकता है कि ड्यूक माइकल जो है वो प्रिंसेस फ्लेविया से शादी कर सके। तो फिर उसकी माँ कहती है कि मतलब दोनों बहनों की जो माँ होती है वो कहती है कि हर वक्त ऐसा ही भी होता है कि जो बड़ा छोड़ेगा तो वो छोटा लेगा, और हो सकता है कि उसे इसी बात पर खुश होना चाहिए और ये वो। तो इनकी ये नॉर्मल कॉन्वर्जेशन चल रही होती है। फिर जो है जो लड़की होती है वो एंड में बोलना स्टार्ट करती है, इट्स लिटिल डीलिंग ब्लैक मार्कर हैज विद। ठीक है, अभी जब वो बोल ही रही होती है कि एक ग्रफ सी वॉइस होती है और वो आगे से एक टोन में स्टार्ट होती है। अच्छा, एक चीज और कि जब तक ये बात हो रही होती है, इस बात के अंदर ये भी पता चलता है कि ड्यूक माइकल जो है अभी वो स्ट्रेलसाउ के अंदर आया हुआ है, और वो अपने लॉज के अंदर ठहरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो उसको हंटिंग का शौक है, वो हंटिंग करने आया है, और वो कल जो है सुबह कोरोनेशन से पहले पहले वहां पहुंच जाएगा। कहाँ? रुरितानिया। अब जो है जेंडा, जहाँ ये आया हुआ है रुडॉल्फ, ये एक शहर है स्ट्रेलसा से थोड़ा दूर, क्योंकि स्ट्रेलसा में कोरोनेशन की वजह से जो है क्या कहना चाहिए, होटल्स खाली नहीं थे, तो ये जो है स्ट्रेलसा से बाहर निकल के एक थोड़ी सी दूरी पे टाउन था जेंडा, वहां ये आके रुका हुआ, ये इन वहां है।
और ड्यूक माइकल भी अभी जेंडा के अंदर है। अब वो अपने लॉज के अंदर है क्योंकि वो हंटिंग करने आया है, एंड इट इज रूमर कि किंग भी इसी के साथ है। तो दे आर लाइक कि किंग की तो कल कॉरोनेशन है, तो किंग यहाँ पे क्यों है, और ये सब ना, तो ये बातें भी इनके बीच में नहीं है। ओके, कंटिन्यू। Who talks of Black Michael in his highest own broad on bird? The girl gave a little shriek, half of fright, half, I think, of amusement. You will not tell of me, Johan, she said. See where your chatter leads. Uh, you will not tell of me, Johan, she said. See where your chatter leads, said the old lady. The man who had spoken come forward. We have company, Johan, said my hostess, and the fellow plucked off his cap. A moment later, he saw me, and to my later a moment later he saw me, and to my amazement, he started back a step, as though he had seen something wonderful. What ails you, Johan? Asked the elder girl. This is a gentleman on his travels come to see the coronation. The man had recovered himself, but he was staring at me with an intense searching, almost fierce glance. Good evening to you, said I. Good evening, sir, he muttered, still, Scrutinizing. still scrutinizing me, and the merry girl began to laugh as she said, see, Johan, it is the color you love. He started to see your hair, sir. It's not the color we see most of here in Zenda. I crave your pardon, sir. Stram, stammered Stammered the the fellow. stammered the fellow with puzzled eyes. I expected to see no one. Give him a glass of drink, my health in, and my health in, and I'll bid you good night. And thanks to you. Give him a glass of drink, my health in, and I will bid. Give him a glass. I'm sorry, ma'am, for interruption. No And I'll problem. bid you good night. And thanks to you, Lesses, for your courtesy and pleasant conversation. So I rose to my feet and with a slight bow turned to the door. The young girl ran to light me on the way, and the man fell back to let me pass. His eyes still fixed on me. The moment I was by, he started a step forward, asking, "Pray, sir, do you know our king?" "I never saw him," said I. "I hope to do so on Wednesday." He said no more, but I felt his eyes following me till the door closed behind me. ओके, सो अब जो है, जब वो लड़की ब्लैक मार्कल के बारे में बात कर रही होती है, देन वी रेड कि एक बहुत भारी सी आवाज ही होती है, वो इंटरप्ट करती है सभी को, और वो आवाज होती है, वो कहती है कि कौन बात कर रहा है ब्लैक मार्कल के बारे में। तो जब वो लड़की मुड़ के देखती है तो वो कौन होता है, वो जोहान होता है। अब वो लड़की जो होती है वो उससे बात करना स्टार्ट करती है, तो उसकी माँ पीछे से कहती है, देखा तुम्हारी बातें कहाँ तक ले गई हमें। मतलब जोहान जो था वो ब्लैक माइकल का जो था वो साथी था। अब वो उसने आके जो है वो उनकी बातें सुन ली। तो अब वो समझ रही होती है कि इसने हमने जो सारी ब्लैक माइकल के, इस लड़की ने जो एल्बर्ट को प्रेफर करती है, इसने जो बातें की है वो उसने सुन ली, और जोहान को शायद बुरी लग गई। मगर ऐसा कुछ नहीं था। तो बस उसने आधी ही बात सुनी थी, और वो आके बस उसको आगे से बोलती है कि आपने मेरी सारी बातें सुन ली हैं। तो इतने में क्या होता है, जोहान अपनी कैप उठाता है और वो बैठने के लिए, मतलब ड्रिंक वगैरह के लिए बैठता है। तो लड़की उसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि हमारे पास एक और कंपनी, वी हैव गॉट कंपनी। जब वो उससे इंट्रोड्यूस करवाती है टू डॉल्स, तो जोहान जरा सा ना, क्या कहना चाहिए, हैरान होता है। लाइक वो एक सेकंड, वो एक स्टेप पीछे लेता है, एंड देन ही इज लाइक
बड़ी हैरानी से उसे टॉप टू बॉटम देखता है कि जैसे उसने पता नहीं कोई या तो बहुत ही खूबसूरत चीज देख लिया तो बहुत बड़ा भूत देख लिया। तो उसके बाद जो है वो लड़की से कहती है कि ये इज द कलर यू लव, क्योंकि फिर जो है वो लड़की बताना शुरू होती है जोहान को कि तो आप और उस डॉल को कि जैसे सर आपके जैसे बाल जो हैं हम जेंडा में मोस्टली नहीं देखते क्योंकि इट इज रेयर। तो फिर जो है जोहान जो होता है, हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि जोहान ने किंग को देखा हुआ होता है और ही डजंट नो कि किंग और रुडोल्फ जो है ऑलमोस्ट काइंड ऑफ रिजेंबल कर रहे हैं क्योंकि उन दोनों के बाल एक जैसे कलर के और उन दोनों की नोजेस हमने स्टार्ट में पढ़ी कि नोजेस भी उनकी एक जैसी थी। एंड रुडोल्फ जो है वो एल्फबर्ट फैमिली को काफी ज्यादा रिजेंबल करता है। तो जब ये दोनों बात करना स्टार्ट करते हैं तो वो जो है रुडोल्फ से बात करता है थोड़ी बहुत। तो वो उससे पूछता है फिर ना बातें नॉर्मल करता है। थोड़ी बार जब रुडोल्फ उठ के जाने लगता है तो लड़की जो होती है वो उसके आगे जो है रात का टाइम होता है तो वो लाइक कैंडल वगैरह दे के रास्ता दिखा रही होती है रोशनी करके। वो उसके पीछे मेरे चल रहा होता है रुडोल्फ। वो देखता है कि जो वो नोटिस करता है कि जोहान जो है मुझे अभी तक घूर रहा है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो बाहर निकलने लगता है तो वो उसे रोक के पूछता है कि आपने क्या हमारे किंग को देखा हुआ। जोहान पूछता है रुडोल्फ से। उस पर रुडोल्फ जवाब देते हैं कि नहीं मैंने आज तक किंग को नहीं देखा बट मैं इस वेडनेसडे जो है उसको देख लूंगा। मेरा है कि मैं आज जाऊंगा वेडनेसडे को तो मैं उसे देखूंगा। तो इतनी सी बात होती है और जब बाहर निकलने लगता है तो रुडोल्फ जरा सस्पिशियस होना स्टार्ट होता है कि ये मुझे क्यों इतनी ज्यादा गौर से देख रहा है। एक तो रुडोल्फ ने अभी तक किंग को नहीं देखा हुआ, जोहान ने किंग को देखा हुआ है एंड प्लस जोहान जो है वो रुडोल्फ को बहुत शक्की निगाहों से और बहुत गुस्से वाली निगाहों से देख रहा है। अब हमें नहीं पता कि वो क्यों उसको इस तरीके से देख रहा है। ये जो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ये हमारी क्लास ऑलमोस्ट एंड हो गई है सो जस्ट स्टॉप हियर।